Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे इंग्लिश रो प्रैक्टिस सेट टी डिस्कशन करबा. आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे. एथिरे आपणकर 30 क्वेश्चंस रहिछि 60 मार्क्स. ईच क्वेश्चन रो राइट आंसर पे 2 मार्क्स रखिबे एंड जदि क्वेश्चन रो आंसर रॉन्ग रहुछि देन 0.5 डिडक्ट करिवे. आउट ऑफ 60 आपणकर स्कोर केते रहुछि आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइ परिबे. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करंतु. By the time the committee submits its final report next month, the project team does data for over a year. Which option is the right answer? Which option is the right answer? Option B will have been collecting data is the right answer. अर्थात will have been सहित verb रो ing form आसीबो means फ्यूचर रो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एठार हम यूज करबा. काहे यूज करबा देखंतु जेते बेले बाय द टाइम सहित एठी नेक्स्ट मंथ रो कथा कहै जाउची एवं ओवर ए ईयर रो कथा कहै जाउची माने समय रो गोटे अवधि विषय रे कहै जाउची. सेते बेले आपण परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस को यूज करिवे. तो ऑप्शन बी विल हैव बीन कलेक्टिंग हिज रो राइट आंसर माने आसंता मास सुद्धा ए सेंस रे राइट. Option B is your right answer. Next question number 2 try karantu. You dash submit the original documents today. Photocopies are perfectly acceptable for the initial registration. Which option is your right answer? You dash submit. Then ଆପଣଙ୍କର photocopies are perfectly acceptable रहिला तो आपनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट करबा दरकार नाही सेंस रे. तो सेठार हमें नीड नॉट यूज करि परिबा. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. समस्त यूज करछंती नीड नॉट इज योर राइट आंसर माने आवश्यक नाही सेंस रे. ओके नीड नॉट जेउ कामटी कोनोसी बाध्यतामूलक नाही. मस्ट आपनकर गोटे बाध्यतामूलक सेंस रे हबो. कैन एवं मे को आपण यूज करंती कैन रिक्वेस्ट ओके एवं एबिलिटी मे आपनकर प्रेजेंट रो पॉसिबिलिटी पर यूज करा जाए. तो ये आवश्यकता नहीं अर्थ रे नीड नॉट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करंतु. चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म को चूज करिवा. राइट करेक्ट पैसिव फॉर्म को चूज करंतु. सेंटेंस कहूची द मैनेजमेंट इज इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल जूनियर असिस्टेंट. व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? यार करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करिवा पूर्वरु गिवन सेंटेंस रो और केउ टेंस रो से देखंतु इज सहित आपनकर वर्ब रो आईएनजी फॉर्म अछि मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रो अछि. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रो पैसिव रो स्ट्रक्चर कोन बीइंग सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म देखंतु बीइंग सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म ऑप्शन सी रो अछि बीइंग इवैल्यूएटेड. दिस इज योर आंसर. द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल जूनियर असिस्टेंट्स इज काहे गबो इज काहे गबो बिकॉज़ देखंतु द परफॉर्मेंस ऑफ अछि समस्त जूनियर असिस्टेंट्स मानक मध्यर माने एमानकर परफॉर्मेंस ता कथा कहै जाउछि. एथि पई परफॉर्मेंस सब्जेक्ट अनुसार वर्ब सिंगुलर रहबो. क्लियरली बुझियो छी. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करंतु. neither the administrative officer nor the junior clerks is present at the briefing yesterday. प्रथम कथा होची yesterday आसिला माने past रे रहइबो राइट. प्रेजेंट रो वर्ब एबो नाही. देन वर्ब आपनकर सब्जेक्ट अनुसार आसीबो. सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर. नेइदर नॉर आसीबो माने पेयर कंजक्शन नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल अछि तो वर्ब भी प्लूरल हिजबो. वेयर इज योर राइट आंसर? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करंतु. क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिवा. ए variety of modern text A variety of modern tech tools has been introduced to enhance workplace efficiency. Which option is the right answer? जेतेबेले आपनकर a variety of सहित plural noun रहइबो देन एठी आपण plural verb यूज करिवे. जदि एठी आपनकर the variety of plural noun रहइबो देन इट इज singular verb. a variety रे plural verb the variety रे singular verb. एठी plural verb कोन हिजबो have हिजबो. Have been introduced is your right answer. Option
B is your right answer. Next question number 6. The director requested the staff dash the meeting until further notice. The director requested आसीगला, then यहाँ पर object आसिला, then infinitive use हबो, to postpone is your right answer. जदि एठी आपनकर object आसीबनी आपण verb ing form gerund form रे यूज करिवे. ओके, माने रखंतु. क्लियरली बुझियला. To postpone is your right answer. ओके, जमिति आपनकर request, order, advise, tell एमिति जदि कोनोसी क्रिया आसीबो यहाँ पर जदि ऑब्जेक्ट आसिला देन यहाँ पर इंफिनिटिव ही यूज हबो, टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फर्दर नोटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. As the final verification of the files, the junior assistant locked the office cabinet. Which option is your right answer? Question number 7. Having completed is your right answer. काहेकि हला यह हेउची परफेक्ट पार्टिसिपल. मन रखंतु गोटिए काम मन रखंतु केते बेले एही परफेक्ट पार्टिसिपल आसीबो गोटिए काम संपूर्ण शेष हेबा परे अन्य कामटी हेले आपण हैविंग पार्टिसिपल हैविंग सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज करिवे. ओके, माने फाइल जांच शेष करिबा परे से कैबिनेट लॉक कले सही सेंस गोटिए काम शेष हेबा परे अन्य कामटी होय. That's why perfect participle use is. Next question number 8. If the administration had act swiftly, the systematic error dash dedicated much earlier. Which option is the right answer? The systematic error dash detected much earlier. कुहंतु which option is your right answer? देखंतु if आसिला गोटे कंडीशनल रो स्ट्रक्चर एवं जेतेबेले if सहित कोन अछि एठी आपनकर हेड सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म if सहित जेतेबेले परफेक्ट टेंस आसीबो देन तार नेक्स्ट क्लोज रे कोन आसीबो would have सहित verb 3 और would have been हिजबो. So would have been detected. Option C is your right answer. यूज करछथि समस्ते would have been detected हिजबो right answer. जदि आपनकर would have been आसीबो माने पैसिव रे और जदि would have सहित verb 3 आसी माने एक्टिव रे तो एठी पैसिव रो कथा कहै जाउछ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. As the budget cuts were severe, the department managed to complete the recruitment drive on schedule. अर्थात कोन दुईटा सेंटेंस भितरे आपनकर एठी कंट्रास्ट को शो करेवा पई आपण although यूज करिवे. कोन यूज करिवे? Although the budget cuts severe माने कोन यार अर्थ होची गोटे परस्पर विरोधी कथा कहै जाउछ. बजेट काट होइथिला तथापि नियुक्ति प्रक्रिया शेष हला सेमिति किछि गोटे रहिछ ना नै तो सेतमे although आपण यूज करिवे. although इज बो राइट आंसर. although even though एमति सब आपनकर यूज हुए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Identify the type of sentence. Although the examination was lengthy, everyone passed and results were declared within a week. एटा आपनकर प्रथमटा रहउची आपनकर एठी रहउची कॉम्प्लेक्स देन आपनकर कंपाउंड. तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज राइट आंसर. इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज सहित आपनकर एंड कनेक्टर्स मध्ये रहउची. तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करंतु. इन द सेंटेंस द बुक दैट इज लाइंग ऑन द कॉन्फ्रेंस टेबल बिलोंग्स टू द सुपरवाइजर. द अंडरलाइंग पार्ट इज एन. एटा आपनकर केउ क्लॉज रे आसीबो? एटा आपनकर केउ क्लॉज हिजो? बुक विषय रे कहै जाउची ना. बुक विषय रे ही दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन का विषय रे कहबो या पूर्वरु आस्तवा नाउन किबा प्रोनाउन विषय रे तो गोटे नाउन क्लॉज हिजो. ऑप्शन व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. सॉरी नाउन क्लॉज नो नाउन विषय रे कहै जाउची. नाउन विषय रे कहै जाउची एडजेक्टिव क्लॉज हबो ना. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. एडजेक्टिव क्लॉज हबो. राइट. एडजेक्टिव क्लॉज मन रखंतु हु व्हिच दैट व्हिच द्वारा आरंभ होतबा सेंटेंस गुडाको एठी दैट द्वारा आरंभ होइछ माने कोन रिलेटिव प्रोनाउन. एई नाउन विषय रे जे विश्लेषण एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दबो दिस इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव रो काम होची नाउन किबा प्रोनाउन विषय रे से कहउतबो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Choose the correct indirect speech of the speech for the supervisor said to the candidate,
why didn't you skip the final question यार indirect speech कौन हबो कोन क्वेश्चन नंबर 12 रो indirect speech कौन हे जो ट्राई करिवा indirect speech ऑप्शन ए ही ठीक लागु छी ए सुपरवाइजर आस्क्स द कैंडिडेट देन एटा ही आपनकर एठी कनेक्टर हे जिवो देन यहाँ पर आपण assertive sentence यूज करिवे he had skipped the final question did अछि verb to अछि this is आपनकर perfect हे जिवो ओके ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 13 choose the correct indirect speech the manager said let us finalize the data entries now टा कोन जो देन हबो तो नाउ कटला ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कटला ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भितर कोन हबो कोन the manager suggested that they should finalize because it is imperative sentence the data entries then is your right answer option B is your right answer next question number 14 try karantu which of the following is correct superlative form of the statement very few assistants in the department are as diligent as Rohan which option is your right answer very few assistants in the department are as diligent as Rohan एगो सुपरलेटिव फॉर्म रे हमें कन्वर्ट करिवा सुपरलेटिव फॉर्म रे कन्वर्ट करंतु रोहन इज वन ऑफ द मोस्ट डिलिजेंट असिस्टेंट्स इन द डिपार्टमेंट कहि परिवा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके क्लियरली बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 प्रिवेंटिव मेजर्स आर डैश क्यूरेटिव एक्शंस इन मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिस्क प्रिवेंटिव मेजर को क्यूरेटिव एक्शन सहित एठारे कंपैरिजन करा जाउछि तो कंपैरिजन पे हमें कोन यूज करि परिबा कंपैरिजन पे बेटर देन यूज हबो राइट बेटर देन एठारे आपण यूज करि परिबे एवं तार अधिक टिके गुरुत्व बढ़े देबा पे फार बेटर देन कहबे ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर फार बेटर देन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फंक्शन वर्किंग लेट इनटू द नाइट हेल्प राहुल फिनिश the entry inventory complement inventory completion तो एठी आपन वर्किंग टा कोन अछि वर्किंग लेट जेरोड फॉर्म रे अछि ना वर्किंग लेट इनटू द नाइट वर्किंग लेट इनटू द नाइट व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर गोटे जेरोड फॉर्म गोटे जेरेंट रो गो सब्जेक्ट रे आसीबो माने एटा आपनकर गोटे वर्बल नाउन भाबरे काम करिवो जेरन फ्रेज इज राइट आंसर वर्किंग लेट इनटू द नाइट तो माने जदी हमें पूराटा देखिबा गोटे जेरन फ्रेज रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करंतु एस ऑनेस्ट मिस्टेक मेड बाय डैश जूनियर असिस्टेंट कैन समटाइम्स कॉस्ट द टीम हेवीली आर्टिकल यूज करिवा एन ऑनेस्ट इजबो सॉरी एन ऑनेस्ट हबो a junior assistant option B is your right answer option B is your right answer next question number 18 try karantu select the option that correctly identifies the plural form of the noun criterion crisis criterion ro criteria crisis ro crisis is your option B is your right answer next question number 19 the new software interface functions dash smoother then legacy system we utilize last quarter तो इठी आपनकर कोन आसीबो फंक्शन स्मूथर गोटे एडजेक्टिव को गोटे कंपैरेटिव डिग्री रे अछि सेटा को जदी मॉडिफाई करबा एडवर्ब यूज करबा ओके तो इठी कंसीडरेबली इ परिबो कंसीडरेबली ऑप्शन ए ही ठीक है कंसीडरेबली इज योर राइट आंसर ओके गोटे एडवर्ब हमको यूज करिवार अछि राइट माने जथेष्ट परिमाण रे सही सेंस रे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करंतु द कमिटी रिक्वायर्ड डैश प्रूफ बिफोर दे कुड प्रोसीड with the official inquiry against the contractor further हिजबो further टा आपनकर डिस्टेंस सेंस रे आसीबो सो further हिजबो राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ट्राई करंतु प्रीपोजिशन रो 21 एंड 22 ट्राई करिवा क्वेश्चन नंबर 21 कोन हबो एंड 22 कोन हबो कोन
The head office has demanded full compliance dash the revised regulatory guidelines issued last Tuesday. एटी complaints सहित आपण कौन यूज करिवे एटी complaints सहित कौन यूज करिवे with complaints with आसीबो ओके complaints सहित fixed preposition with आसीबो माने नियम पालन करिवा सेंस रे नेक्स्ट द जूनियर क्लर्क वाज absolved dash all charges of misconduct after the internal audit कोंतु एटी मध्ये समिति fixed preposition आसीबो ओके absolved माने दश मुक्त करिवा सेंस रे ऑफ आसीबो absolved of okay this is your fixed preposition of is your right answer option B is your right answer clear next question number 23 is dash architectural engineer who graduated from dash university of London माने लंडन रो यूनिवर्सिटी माने एठी आर्टिकल दो आसीबो then he is n हिजबो n हबो द हबो ऑप्शन सी एठी आपनकर OLs रो प्रोनाउंसिएशन आसी n आउ द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके देन गोटे पैसेज रहिची रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो आपण कोंतु प्रथमे ई पैसेज टी पढिबे देन आंसर करिवे अदरवाइज आमे कोन क्वेश्चन पचारा जाईची सेई पाखको जिबा देन आमे सेठारु कीवर्ड को मैच करी आंसर बाहर करबा अदरवाइज जदि आपण पढिबे टिके भलो भाबरे पढंतु समय नियंतु आपण अर्थ बुझी पारुचंती पैसेज रु आपण कोन ड्राइव करूचंती ठीक अछि किमा आपण को बुझु नाही नो मैटर बट आपण पढंतु समय नियंतु पढंतु टिके तो फर्स्ट पैराग्राफ ता पढिले देन सेकंड पैराग्राफ पढंतु प्रथमे आपण किछि अर्थ बाहर करिया दरकार नै प्रथमे पढंतु पेशेंसली क्लियर सेकंड पैराग्राफ ता पढिले वीडियो को पॉज करी मध्ये पढि परिबे देन थर्ड पैराग्राफ ता पढंतु ओके क्लियर ठीक अछि किछि असुविधा नै आपण प्रथमे पढंतु देन एठार देखंतु क्वेश्चंस कोन होइछि क्वेश्चन नंबर 24 according to the text what is the primary benefit of the shift towards e-governance रो कथा को जाउछि राइट कोंतु एही पैसेज अनुसार मुख्य बेनिफिट कोन रहउछि जेतेबेले ई गवर्नेंस को शिफ्ट करा जाउछि यही तो प्रश्न देन आमे जिबा ई गवर्नेंस कोटे हमको कीवर्ड मिलिला तो ई गवर्नेंस को आमे मैच करबा ओके ई गवर्नेंस को मैच करंतु आपनकर ऑब्वियसली प्रथम प्रश्न मींस प्रथम पैराग्राफ ही रहबो देखंतु एठी गोटे वर्ड पाइले आमे ई गवर्नेंस ओके shift towards e-governance leverages cloud computing, centralized database, automated algorithms to streamline operation, optimize resource allocation and foster transparency. E-governance जोगु एटा this is the benefit. Okay. तो एटी देखो तो options रे कोन अछि? Options रे कोन अछि? Optimize resource allocation, streamline operation and foster transparency. This is the primary benefit. Option C होइजबो यार राइट आंसर बुझियला एमिति आपण मैच करी मध्ये बाहर करि परिबे एमिति क्वेश्चन नंबर 25 रे कोन कहला कोंतु why does the author caution against purely digital submission for socio economic benefits रे प्रश्न बुझंतु ऑथर काहे कि गोटे सतर्क करै चंती जे हमें कंप्लीट जदी डिजिटलाइज सबमिशन कर दवा ताले सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऊपर कोन एहारो प्रभाव को नै कि से कहै छि देखंतु एटा आपनकर केउ स्टैंजा रे रहि छि फर्स्ट पैराग्राफ रे तो देखिले सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेनन एटी गोटे पाइले सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेनन एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओके एटा को रिलेट करी आपण बाहर करि पारि पुणी थरे आमे प्रश्नटा पढिबा टिके भलो भाबरे why does socio economic benefits विषय रे कहै जाय तो socio economic benefits ओके तो देखंतु socio economic benefits को नै कि कोन आपण बुझु छथि
एठी को गला सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स रे रिस्क रही इन inadvertently marginalizing the very demographics they intend to uplift. तो बुझियोनी हमू टे पढियार ही अछि हमू पढियार अछि पैराग्राफ टा टिके भलो भाबरे पढियार अछि पढंतु despite these evident এই প্যারাগ্রাফটা যদি আপন ভালো ভাবে টি পঢ়িবে despite these evident systemic upgrades जो करा जिवो the transition is not devoid of conspicuous friction points. The primary impediment to widespread digital public administration is the socio-economic phenomenon. Okay, आपन कोन से अर्थ नो जस्ट खाली सेंस बुझंतु known as the digital divide. Okay, while urban centers often enjoy high speed internet connectivity and widespread digital literacy, peripherals rural districts frequently suffer from the manufacture defects and low technology familiarities. Consequently, public policy that mandate purely digital submission for the socio-economic benefit जो risk ऊपर कहगला अर्थात कौन ग्रामांचल जो इंटरनेट रो अभाव एवं जो कम कंप्यूटर ज्ञान जोगु केवल डिजिटल को गोटे माध्यम कले गरीब लोक माने एथिरु गोटे जो वंचित रहबे ठीक अछि सेही सेंस रे कहआ जाउछि क्लियरली बुझि होछि सेकंड पैराग्राफ रो तो एठी कोन हिजबा आपनकर व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर ऑप्शन बी it could marginalize demographics due to existing infrastructure defects and low digital literacy this is the आपनकर या विरोध रे जो आपनकर कहआ जाउछि सतर्क करि दिया जाइछि ए सेंस अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 what does the term labyrinthine means used in the first paragraph यार अर्थ कोन कोंतु यार अर्थ कोन बिकॉज देखंतु जेतु एठी आपन को डायरेक्ट गोटे यार अर्थ पचारिछि आपन डायरेक्टली मध्य बाहर कर दे पारिबे अदरवाइज फर्स्ट पैराग्राफ रे कोन ए वर्ड रो अर्थ कहिछि एटा आपन बुझिया पय फर्स्ट पैराग्राफ को जिबार अछि देखंतु ए वर्ड टी आपन को केउ ठारे अछि केउठी अछि लेबरिंथ फर्स्ट पैराग्राफ रे एठी केउ ठारे अछि वर्ड टी पढियार अछि द रैपिड proliferation of digital infrastructure within the public administration has fundamentally reconfigured how local government interacts citizenry traditionally public हाँ ये देखो यार अर्थ कौन आसुची ब्यूरोक्रेटिक पाइपलाइंस यार अर्थ कौन आसुची देखंतु आपण जदि भोकाब भी जानि जदि बाहर करि परिबे अदरवाइज एठु भी जदि आपण बाहर करिवे द रैपिड proliferation of the digital infrastructure within the public administration has fundamentally reconfigured how local government interact with the citizenry माने जो डिजिटल गवर्नमेंट्स रो कथा कहआ जाउची ट्रेडिशनली जो थिला हमर जो सर्विस गुडा को ता केते माने जटिल थिला सेही विषय रे कहआ जाउची तो ओके केते जटिल थिला राइट तो यार मीनिंग ता केते जटिल थिला आछी कि नै देखंतु क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल एंड डायरेक्ट हबनी इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग रो कथा कहआ जाउची ठीक अछि माने डिजिटल गवर्नेंस हबा पूर्वरु केते जटिल यार मीनिंग ता या आछी then question number 27 कोन कहउची देखंतु according to the passage a balanced modern administration infrastructure most prioritize कोन हबो कोन एटा थर्ड पैराग्राफ रे थिबो obviously okay balanced modern administrative infrastructure most काहा को प्रायोरिटाइज करूची देखंतु हमें जीवा थर्ड पैराग्राफ दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ एटा टी पढंतु furthermore integrating automation into public workflows introduce करूची significant data privacy रो कथा कहआ गला when vast troves of personal identifiers fiscal records and medical histories are consolidated into unified servers they become high value target हिजबो जेमति malicious attack रो कथा कहआ जाउची सिस्टम जदी ब्रीच करिवो देन एटा गोटे कंप्राइज नेशनल सिक्योरिटी एंड जो इंडिविजुअल रो गोटे आइडेंटिटी ऊपर मध्ये प्रश्नवाची सृष्टि करिवो देयरफॉर
Modern administrative infrastructure must not merely prioritize operational value, it must equal invest into robust multi-layer cryptography माने security framework and continuous workforce जो upskilling रो कथा कहा जाउची जहा गोटे इवॉल्व हिची गोटे साइबर थ्रेट भाबरे अर्थात कोन आपनकर माने एठी कहा जाईची जे आमे केवल स्पीड कनेक्टिविटी रो कथा कहले हबनी सुरक्षा एवं जो कर्मचारी जो दक्षता वृद्धि वर्कफोर्स रो जो अपस्किलिंग रो कथा कहा जाउची ता ऊपर गुरुत्व देवा विषय कहा जाउची ताले देखंतु एटा केउ ऑप्शन रे अछि क्वेश्चन नंबर 27 रो operational speed alongside multi-layered cryptography security framework and workforce ro upskilling कथा कहा जाउची ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके देन क्वेश्चन नंबर 28 रे व्हाट वाज द एंटोनिम ऑफ रिक्यूपेरेट रो एंटोनिम कोन हो कोंतु रिक्यूपेरेट रो एंटोनिम कोन रिक्यूपेरेट रो अर्थ होची कोन फेराई नेबा बा सुधारिबा रिकवर करबा सेंस रे ओके तो आर एंटोनिम माने ऑपोजिट हिजबो जोटा हराइबा ठीक अछि माने जोटा रिकवर करि परिबा नाही तो सही सेंस रे फॉरफिट कहि परिबा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द सेंट्रल थीसिस ऑफ द पैसेज ई गवर्नेंस माने डिजिटल गवर्नेंस रो कथा जदियो आपण पढि नांती कंप्लीट पैसेजटा इतिको क्वेश्चंस करबा समय तो आपनको माइंड को एटा छुइबो ना डिजिटल गोटे ट्रांसफॉर्मेशन केमिति करबा while digital transformation enhance governance it requires addressing infrastructure जो inequalities and data security रो जो vulnerabilities रो कथा कहा जाउची एटा ही तो एटा या ऊपर ही तो पैसेज टा आपण करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कोंतु which word passage means an administrative model or clear pattern of element गोटे मॉडल रो कथा कहा जाउची गोटे मॉडल को नै कि एठी जे हम वन वर्ड करबा ऑप्शन ए रे कहला प्रोलिफरेशन माने किछि जिंस रे गोटे वृद्धि एटा हबो नाही ओके पाराडाइम ही परिबो ठीक अछि एटा होची गोटे मॉडल पाराडाइम रो अर्थ होची एक निर्दिष्ट मॉडल बा ढांचा ठीक अछि इम्पीडमेंट मान तो एटा बाधा क्षेत्र रे कॉन्फ़िगरेशन सरलना सो ऑप्शन बी हिज राइट आंसर जदियो हमें पैसेज पढि नांदी जदि हमें मीनिंग जानि चंदी एटा हमें रिलेट करि परिबा अदरवाइज आपन को कंप्लीट पैसेज टी पढि मते आपन सॉल्व करि परिबे तो आउट ऑफ 60 आपनकर आउट ऑफ 60 स्कोर केते रहउची आपन कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे ठीक अछि ए पैसेज टी टिके कॉम्प्लिकेटेड थिला आपन जम्मा व्यस्त हेबे नै पढिबे आपण रिलेट करिया पे ट्राई करिवे कोन सी अर्थ कोन सी मीनिंग जानि ना इट्स ओके बट आपण जेमिति भी हो एनी हाउ आपण को पढिबार अछि एंड याको रिलेट करी सिखिबार अछि आपण ई पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिवे क्लास टी को लाइक करंतु शेयर करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास।